one. Again Lisha this side. As we all know, in my Insta page also I have discussed many things on pharmacology, as well as I have discussed many things on syndromes. After that I have discussed many things on your oral path. Okay, so after these things and after my last lecture, that is on fracture, I am gonna start with your general medicine. Now all my topics will be on general medicine, and I will be cover only the important topics, because as we all know that the general medicine is a very vast subject. So if you like my videos, please share, subscribe, and let's start this lecture with this topic, viral hepatitis. Viral hepatitis is a very easy topic if we can understand it, and it comes under the section of infections. Okay, so as I have written already, what is a hepatitis? Hepatitis is the inflammation of liver. Okay, so the inflammation of liver is known as your hepatitis. How it causes? It causes by viruses. Now this virus spread into different way. Okay, and we are having different type of hepatitis. What type of hepatitis we have? That is your A, B, C, D, E. Like this you can remember. A and E have a similarity between it. Okay, how it is similar? It's spread by fecal-oral route. Okay, it's spread by fecal-oral route. Whereas B, C, D, this all spread by blood-borne. Okay, so this is the types of etiology, or you can say the type of spread. Other than these things, we also have a E, that is it's spread in your pregnant woman. It's spread in your pregnant woman. As well as the C, it's spread by IV drugs, your intravascular drugs. Okay, so this is just an introductory part of your viral hepatitis. Now we will divide this lecture into your pathology. After that we will see the clinical symptom, and after that the investigation, and then the treatment of it. So as I have told you that what is hepatitis? Hepatitis is the inflammation of your liver. Okay. Now come to your pathology. Please, I don't have the images of pathology, but I will try to make it out in front of you. Okay. So pathology. First thing is, it is having the enlarged red liver. It is having an enlarged red liver. First thing is this, and enlarged red liver. Okay. The second thing is this we can see as a gross. Okay, as we can do the ultrasonography or anything, we can see this in a gross. But in microscope, what we can see is the following: swelling of hepatocytes. First, swelling of hepatocytes. Okay. Then second is the ground glass of hepatocytes. The ground glass of hepatocytes. The third is your cholecystiasis. The third is of your cholecystiasis. Then fourth is your macrophage aggregation. Macrophage aggregation. Question comes, what is macrophage? Okay, so macrophage is the cells in a blood which do phagocytosis, okay, of the dead cells. So macrophage aggregation. Then bridging necrosis. Then portal tract inflammation. Then fifth one is your hyperplasia of Kupffer cell. Hyperplasia of Kupffer cells. Okay, what is Kupffer cells? Kupffer cells is the phagocytic cells in the liver. So again I repeat, what is it? The thing is, what is the pathology? Pathology gross is your enlarged red liver. In microscopic you can see swelling of hepatocyte. Hepatocyte is the unit cell of the liver. Then we can see the ground glass hepatocytes. Then we can see the cholecystiasis. Then we can see macrophage aggregation at its start necrosing. So there we see the macrophage aggregation. Then we can see the bridging necrosis. Then we can see the portal tract inflammation. And then we can see the hyperplasia of your Kupffer cells. Okay. This where we can see.
This we can see in your acute cases. Okay, this we can see in your acute cases. Now the question comes, what we can see in our chronic cases? I am telling. We see cirrhotic liver with fibrous septa and irregular with fibrous septa as well as irregular nodules. So what we can see in the chronic cases? We can see a cirrhosis of liver with the fibrous septa with the irregular nodules. Again I am repeating because it's very, very important. Cirrhotic liver, fibrosis septa and irregular nodule. This is the sign of your chronic hepatitis. As well as microscopically we can see the bridging of fibrosis of the portal and periapical region. The microscopically we can see bridging of fibers. You can see bridging of fibers or fibrosis of portal. Okay, bridging of fibers of portal and your lymphoid aggregates okay, as well as lymphoid aggregates. This we can see your microscopically. Now come to your clinical feature. What are the clinical features of your hepatitis? See, all the clinical features may not be same, but I am telling you about the viral hepatitis. So I am telling you the common, which is common in each and every hepatitis. Okay, so what are the clinical features? First, abdominal pain. First is your abdominal pain. Second is your dark urine. Then third is your hepatomegaly. Fourth is your jaundice. Fifth is your sclerotic icterus. Then HBV and HCV, chronic active hepatitis. In HPV and HCV, we see chronic hepatitis. Okay, so this is the main clinical features we can see. What are this? We see abdominal pain, we see dark urine, we see hepatomegaly, we see jaundice, we see sclerotic icterus, we see HBV and HVC chronic hepatitis. When these features come to an extent into your secondary form, then it can cause hepatic carcinoma. Okay, so this is your clinical features of your viral hepatitis. Now come to your lab finding. It is very, very important. See, we are taking the topic of hepatitis in medicine, and in medicine the lab finding is not so important, but we will discuss it here only so that we will not get confused. Now come to your lab findings. Okay, so the first lab finding is elevated ALT and AST level. That is your elevated ALT and AST levels. Second is your serological markers. What are the serological markers? Okay, this all comes into your liver function test. That is also very important to know. So what are the serological marker? That is your IgM antibody to HAV detect. That is your IgM antibody to your HAV detect. And active HAV, that is, and also active HAV infection. That is also active HAV infection. I know lab findings is really a very complex way to understand. So before making it understand, I just give you a review of hepatitis. So in hepatitis, what we told, hepatitis होता है liver का enlargement. Okay, जब liver का जब enlargement हो जाता है किसी भी viral reason के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं hepatitis. Hepatitis हम लोगों के बहुत सारे टाइप के होते हैं, A, B, C, D, E. ठीक है, A और E में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों हम लोगों को फीको
ओरल रूट में हम लोग मतलब इटियोलॉजी है उसके कारण होता है, जबकि बी सी डी हम लोग का ब्लड बॉर्न होता है, फिर सी हम लोग का जो होता है वो आईवी ड्रग्स के कारण होता है, और जो ई जो हम लोग का होता है वो हम लोग का प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। क्लियर इतना तक? नाउ कम टू योर नेक्स्ट कि हम लोग इसमें दिखता क्या है। इसमें जो दिखता है लैब फाइंडिंग आप बोल दीजिए, या फिर आप इसमें बोल दीजिए कि पैथोलॉजी क्या है। तो इसमें हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट में हम लोग को क्या दिखता है, एक्यूट में हम लोग को दिखता है कि इसमें हम लोग के फाइबर्स बन गए हैं, फिर इसमें हम लोग का जो देयर इज अ रेड ग्रॉस स्वेलिंग हो गया है यहाँ पे, अच्छा मैंने इसको मिटा दिया। देन हम लोगों का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो गया है, एज वेल एज हम लोगों का यहाँ पे कॉलेसिस्टियासिस हो गया है, मैक्रोफेज एग्रीगेशन हो गए हैं, इवन कफर सेल्स का हम लोगों का एग्रीगेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। जबकि जो सेकेंडरी है उसमें तीन फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तीन फीचर हम लोग के कौन कौन से थे? तीन फीचर थे हम लोगों के साइरोटिक लीवर, फाइब्रस सेप्टा एंड इरेगुलर नोड्यूल्स। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग का इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर क्या होगा? लीवर का अगर हम लोगों का अगर एक्यूट है तो क्या क्या होगा? डार्क यूरिन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, हम लोग का जॉन्डिस होगा, हम लोग का योर सिरोसिस होगा, और अगर बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो हम लोग को कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू लैब फाइंडिंग। अब लैब फाइंडिंग में मैं सबसे पहले बोला एएलटी और एएसटी का लेवल बढ़ जाता है, इसमें हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग को सेरोलॉजिकली क्या दिखता है? अगर हम लोग आईजीएम बढ़ा हुआ देखते हैं तो हम लोग को देखते हैं कि आईजीएम एचएवी मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस से हम लोग का ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेकंड आईजीएम के बाद हम लोग अगर ये देखते हैं कि आईजीजी है, अगर हम लोगों का आईजीजी है तो या तो ये एचएवी पहले हो रखा था, या तो ये ओल्ड एचएवी इन्फेक्शन है, या फिर हम लोगों का यहाँ पे भी एचएवी में ही ये एक्टिवेट होता है, एचएवी में ही ये एक्टिवेट होता है। देन थर्ड, अगर आईजीजी दिखता है तो भी हम लोगों का आईजीएम और आईजीजी दोनों हम लोगों का एचएवी में होता है। अगर आईजी या फिर एंटीबॉडी टू एचबीएस या फिर एचबीएस-एजी, मान लो एक इंसान को HbS-Ag है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसको साइन तो नहीं है हेपेटाइटिस का, बट ये कैरियर है हेपेटाइटिस का। बट ये क्या है? कैरियर है। तो जो ब्लड बॉर्न जो हो रहा है ना, तो वो हो सकता है। ठीक है, ब्लड बॉर्न कैसे हो रहा है? बीसीडी होता है हम लोग का ब्लड बॉर्न, तो वो हम लोग का किससे हो सकता है? HbS-Ag के कारण हो सकता है। जबकि IgM और IgG जिसमें होता है उसमें हेपेटाइटिस ए हम लोग को दिखता है। ठीक है, ना कम टू द योर आईजीएम अगर हम लोग का एंटीबॉडी हो गया, मान लो कि हम लोग को आईजीएम अगर हम लोग को दिख गया, तो फिर ये हम लोग को HbC-Ag या तो HbC-Ag के कारण दिखेगा, और ये क्या होगा हम लोग का? एक्यूट इन्फेक्शन। और ये क्या होगा हम लोग का? साइन ऑफ योर एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आईजीएम एचएवी, आईजीजी ओल्ड एचएवी, HbS-Ag तो ये कैरियर है, सिम्टम नहीं दिख रहा है पर ये कैरियर है, और आईजीएम भी हम लोग को HbS-Ag के साथ अगर दिखेगा तो हम लोगों को एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ कम टू योर ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये किसी इंसान की गलती से ज्यादा किसी टेक्नीशियन और डॉक्टर की गलती के कारण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड बॉर्न है। नाउ कम टू योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं? ट्रीटमेंट हम लोग इसमें वैक्सीनेशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इसका क्या ट्रीटमेंट है? प्रिवेंशन। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? वैक्सीनेशन। सेकेंड, HBV एंटीवायरल्स, HBV एंटीवायरल्स हम लोग देख सकते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ इंजेक्शन ही है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो HCV-PEG इंटरफेरॉन्स हम लोग इसमें, ये हम लोग का हो जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर वायरल हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम लोगों ने वायरल हेपेटाइटिस को पढ़ा कि क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रॉसली हम लोग को क्या दिखेगा एक्यूट में, ग्रॉसली हम लोग को क्या दिखेगा सेकेंडरी में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा। क्लिनिकल फीचर पढ़ा, लैब फाइंडिंग पढ़ा, और इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। नेक्स्ट मैं आपको एक शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी HABCDE में क्या डिफरेंस है। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग।